डिपार्टमेंट है, यू हैव योर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस है, कस्टम्स है, स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट है, एक्सेट्रा. यू हैव योर सेल टैक्स डिपार्टमेंट, एक्सेट्रा. यू हैव डायरेक्ट टैक्सेस. तो ये जो दो कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, आई जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू सिंपली एंड देन वील डू सेक्शन वाइज. When you talk about direct taxes, those are taxes which you directly pay to your government. For example, TDS. Okay, जो टैक्स आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हो, जैसे आपके टीडीएस है, आपके सैलरी में जो टैक्स डिडक्ट होता है, कॉर्पोरेट टैक्स है, वेल्थ टैक्स है जो अभी नहीं है, ये आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हो. इसके लिए दे आर कॉल्ड एज डायरेक्ट टैक्सेस. Then comes your indirect taxes. अगर आपने कोई भी चीज का लेबल पढ़ा हो, ओके, आप होटल में खाना खाने जाते हो, यू जस्ट गो स्टेप इन टू द, yes, I'll be explaining, I'm explaining in both the languages together. Whatever I'm explaining in English, it is the same thing that I'm trying my level best to translate. Okay, so it is not possible for me to do it 100%. And please understand that we also have a time limit. So if we keep on doing this translation thing, that will also be time consuming. So I'll brush up the topic, but everything you will understand. If you feel that you have not understood any particular concept, you can quickly ask a question. ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई कॉन्सेप्ट. मैम, you have started the taxation right now? Sorry? Ma'am, right now you have started the taxation? Yes, right now I've started with taxation. Okay, ma'am. Okay, so I'll try my level best to explain in both the languages, but please understand कि हमारे पास time का भी issue है. We need to complete a lot of act in 4 hours, in 2 hours, 1.5 hours, not even 4 hours, only 1.5 hours. अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आया, just drop it in the chat box. I'll explain it to you again. Okay, and स्क्रीन पे कंटेंट वैसे भी चल रहा है, तो यू विल गेट एन आइडिया दैट व्हाट एग्जैक्टली इज द कॉन्सेप्ट दैट आई एम एक्सप्लेनिंग. ओके, सो second concept is indirect taxation. What is indirect tax? Indirect tax means taxation which is paid indirectly to the government. You go to a hotel and you see that your bill, it has something called as GST, CGST. ठीक है, अगर आप होटल में जाते हो और आपका बिल देखते हो, आपको दिखता है कि जीएसटी लगाया है, सीजीएसटी लगाया है, अपनी ड्रेस की शॉपिंग की, अगेन सेम टू थिंग्स. ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स. आप हर छोटी चीज जो खरीदते हो उस पे आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हो. सो दैट will explain you in detail what is direct tax and what is indirect tax. The key important sections, जो important sections है taxation में, they are section 224, definition of income. Okay, definition of income. Income के अंदर क्या आता है? You have your salary, business, profits, capital gains and other sources of income. Then comes section 4, ठीक है, जिसमें आता है charge of income. इनकम के अंदर क्या क्या आता है? सैलरी है, बिजनेस प्रॉफिट्स है, कैपिटल गेन्स है एंड सोर्सेस ऑफ इनकम. जो भी आपका सोर्सेस ऑफ इनकम है, आप प्रोफेशनल हो, आप कोई कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है वो. देन कम्स चार्ज ऑफ इनकम टैक्स. That is, it specifies that the tax is levied on the total income of a person for the previous work. That is when you file your annual returns. Mostly it applies for the professionals. When you file your annual returns, your taxation is calculated on that basis. Then comes your exemptions. तो जो भी आपका चार्ज ऑफ इनकम है, आपने जो एनुअल रिटर्न्स फाइल किए उसके ऊपर आप टैक्स पे करते हो. नहीं तो अगर आप एम्प्लॉय हो तो आपकी जो सैलरी है उस हिसाब से आपकी टैक्स डिडक्ट होती है, आपके एम्प्लॉयर उस टैक्स को डिपॉजिट करते हैं. Then comes your exemption, section 10.
It lists incomes to exempt from tax. For example, agricultural income hai, or your HRA. All these incomes are नॉन टैक्सेबल. जो नॉन टैक्सेबल इनकम है जिसपे आप टैक्स नहीं लगा सकते हो वो है एग्रीकल्चरल इनकम. अगर आपको खेती बाड़ी से इनकम आ रही है तो वो टैक्सेबल नहीं होती है. अलाउंसेस लाइक HRA, हाउस रेंट अलाउंस, जो आपके सैलरी के साथ मिलती है, वो टैक्सेबल नहीं होती है. Section 80C to 80U, they talk about deductions. What are the different types of deductions? That is, various deductions. They reduce taxable income. That is, investment in public provident fund, health insurance premium. तो उस पे टैक्स नहीं लगता है. तो when you these these deductions are done in your salary, this amount is not taxable. आपकी जो सैलरी होती है, दिस इज मोर फॉर सैलरी पीपल, तो उसपे आपको पता होगा कि प्रोविडेंट फंड होता है, ग्रेचुइटी फंड होता है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम होता है, उस पे टैक्स नहीं लगता, उसको हम डिडक्शन बोलते हैं. वैसे ही डोनेशंस पे, वी डू डोनेशंस टू टेम्पल्स एंड NGO, so those incomes are also not taxable, provided they are a registered entity. Okay. Then comes section 139 to 147, which talks about filing of returns and assessment. आपने सुना होगा मार्च 31 को सब CA बैठ जाते हैं रिटर्न्स फाइल करने में. तो रिटर्न्स में होता क्या है, आपके टैक्स जो भी आपकी इनकम है उस साल में, वो डिटेल्स आपको भरनी पड़ती है. अगर किसी ने आपका TDS डिडक्ट किया है तो आपको फॉर्म 16 फाइल करना होता है. ये सब होता है रिटर्न्स और असेसमेंट. तो वॉट एवर is your income when you are an individual, or if you are a working professional, okay, when you file your returns and there is an assessment done, so then you can claim your additional tax that may be paid. So you, every individual needs to file their returns so that you can claim if any excess amount has been reduced from you in the name of tax. Then comes your corporate tax. So your companies are taxed on the basis of their net profit. कंपनीज का जो नेट प्रॉफिट होता है उसके बेसिस पे उनको टैक्स किया जाता है. फिर आता है कैपिटल गेन्स टैक्स. मतलब कि जो भी कैपिटल गेन्स है, अगर मेरे पास एक प्रॉपर्टी है एंड दैट प्रॉपर्टी, आई ओन अ प्रॉपर्टी एंड दैट प्रॉपर्टी इज गेनिंग वैल्यू over a period of time, then I need to pay something that is called as capital gains tax. This is mentioned under section 45 to section 54. Okay, section 45 to 54 के बीच लिखा गया है कि जो भी आपके कैपिटल गेन्स है उस बारे में. फिर आता है इनडायरेक्ट टैक्स, जो what I had previously explained, that when I purchase a goods or services, I am indirectly paying my tax to the government. Example, GST है. GST का स्लैब्स है, यू हैव टैक्स स्लैब्स, किस प्रोडक्ट पे कितना GST अप्लाई होता है. 0% है, 5% है, 12% है, 18% है, 28%. गुड्स पे. हेलो हेलो या मैम, इन अवर सिलेबस GST is also there, या only income tax? in income tax, this is just one of the topics. Sorry, I am asking that GST is also there in our syllabus of AIB. Sorry, GST हमारे सिलेबस में है AIB के. I am just teaching you in case if a question comes, you have taxation में direct taxation and indirect taxation. So GST is a form of indirect tax. You don't have everything in detail, and either ways taxation is just a 2 marks question. That's why I'm rushing it. Okay. Okay, so when you talk about indirect taxation,
जीएसटी एक एग्जाम्पल है. यू हैव एन एग्जाम्पल ऑफ जीएसटी विच इज अ टैक्स दैट इज पेबल टू द गवर्नमेंट. You have your input tax credit, wherein it allows businesses to claim credit for taxes paid on input. जीएसटी के आपको रिटर्न्स फाइल करने होते हैं. यू हैव टू फाइल रिटर्न्स द वे यू फाइल योर पर्सनल रिटर्न्स, like that you will file your GST returns. Then you have your customs duty, which is levied and generally applied on goods that are imported or exported from India, and they are governed by the Customs Act 1962. Okay, customs ड्यूटी जो है, कस्टम ड्यूटी जो है वो किस पे लगता है? जनरली जो भी गुड्स आप इंडिया से इंपोर्ट करते हो, एक्सपोर्ट करते हो, उस पे कस्टम ड्यूटी लगता है. की इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द सेम आर सेक्शन 12, दैट इज चार्ज ऑफ customs duty on import and export. Section 12 will tell you what is the charge on which goods and how much is the percentage. Basic custom duty, which is levied on all the goods. Then comes IGST on import, which is equivalent to domestic GST. Okay, GST on domestic transformation. Then comes anti-dumping duty, which is done to protect the domestic industry. That is, you can't dump, your electronic waste, or you can't dump your clothing industry in India. तो कुछ की प्रोविजंस जो कस्टम्स ड्यूटी के है वो है सेक्शन 12. जो चार्जेस है किन प्रोडक्ट्स पे आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कितना कस्टम ड्यूटी लगेगा वो. बेसिक कस्टम्स ड्यूटी जो सारे इंपोर्टेड गुड्स पे लगता है. आईजीएसटी जो जीएसटी है डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस के लिए, फॉर एग्जांपल दुबई से कोई चीज दिल्ली में आई, दिल्ली से कोई चीज बॉम्बे में आई, उसके लिए. फिर है एंटी डंपिंग ड्यूटी. अगर आप कपड़े जो डंप करते हो इंडिया में, या फिर जो भी प्रोडक्ट्स है आप उसको डंप करते हो चीप, तो फिर अगर कोई प्रोडक्ट इंडिया में डंप होती है तो वो बहुत सस्ती हो जाती है, तो फिर हम इंडियन प्रोडक्ट्स को बेच नहीं पाते. तो इसलिए एंटी डंपिंग ड्यूटी. Key tariffs and policies. Now, India, it generally follows the harmonized system of nomenclature for classification and exemptions. कि कौन से products custom duty से exempted है is mentioned in section 25 of the Customs Act. Excise duty जो है वो लगता है specific goods पे, लेकिन उसको अभी रिप्लेस किया गया है जीएसटी. Excise duty is something that is thoroughly replaced with GST now. Other duties and taxes that we have, that is stamp duty. हम कोर्ट डॉक्यूमेंट्स खरीदते हैं, even when you file a suit there is a stamp duty. Professional tax, lawyers का 10% professional tax डिडक्ट होता है. सेस एंड सरचार्जेस जो मिलता है, जो डिडक्ट होता है हेल्थ और एजुकेशन सेस के. This is a table for difference between direct tax and indirect tax. You can just go through the same, the landmark judgments. Okay, next जो है हम contract law की तरफ proceed करते हैं. So let's proceed ahead with the Contract Act.